In this session, we will discuss about the Photoshop. Okay, so come to our topic, color swatch, foreground and background color. Okay, so there is some shortcuts to set the default foreground color and background color. You can use the D and swap both of the colors. You can use K. Okay, so how to do? Let us see. Foreground color is the color of drawing tools used to draw on the canvas, and background colors is the color of the canvas which is by default white. These colors can be set from the foreground and background color control on the toolbox. So everyone, for what is foreground and background colors? Every image is having a layer. Okay na, like I am going to open an image. Okay na, like which image I should to take. Desktop, any image is there. I think, where is the downloads? Documents, pictures. Okay, so I am going to take this image as an example. Okay, now so open with. I am going to open this photo to my Photoshop application. So click on start and then type Photoshop. Yeah, it has been. Then open, locate your photo to open inside this environment, not new. Click on file, then choose open. After that, the file was inside the pictures. So come to the pictures, screenshots, the last image. Okay. So it is our image and every picture is having its own layer. So you can see there is layer 0. Okay now. Sometimes it will display background. Okay now. So but that's okay. Okay. Next, background and foreground. So by default, you will see, if you will open, then by default it will display the foreground color is black and background color is white. Okay. Top section it is showing that foreground color is black and the background color is white. Okay now. So what is foreground color and what is background color? Okay now. So if I will take a brush, okay now, it is the brush tool and I am increasing its diameter by going on its options from opacity brush. Okay, increase the diameter of brush. Okay, that is sufficient. And then I am going to color my image. Okay, so you can see it is flowing the black color. Okay, my tool is flowing the black color. मतलब मेरा ब्रश क्या है, ब्रश जो है ब्लैक कलर फ्लो कर, मतलब फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लैक है इसलिए हमारा ये ब्लैक कलर को फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर इन केस ऑफ हमारा फोरग्राउंड कलर दूसरा होता है, सपोज कीजिए हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक ऑन दिस एंड देन चूज योर कलर। आई एम टेकिंग like purple. Okay, then I have choose that purple color and click OK. So now you can see my color has been. If I will do the on my image, then you can see foreground color is purple is coming. Okay now. Next, if you want to use background color, okay, so switch it from by clicking on this arrow, and then you can also
the background color as form. Okay, now how to use the background color in many ways. So I am showing like I am taking a selection to rectangle selection. Okay, and then I have selected this area, like a top area. I have selected this top area. Okay, and then I'm going to delete. Okay, so right click and then deselect layer, new layer, layer via cut. After cutting the layer, sorry, after cutting the layer, it will not display, but delete button. Okay, after pressing the button, it will my background will be white. Okay, now my background will be white. It is not displaying because of we need update is one. Okay, so just wait for a minute. How it will work? I am going to you. Take a new, and then background color is by default white. I am taking like 4 6. Okay, it has came, and then I am taking any that image which I have taken last time. Yeah. Okay. Then I'm placing my image to here. How to place your image? Hold the control key. You can see the effect on my cursor. If you will hold the control key, my cursor will change to the arrow. Okay. So hold the control key and place it. Drag your image to your new layer which you have created. Then close the current window and then after that use the window which you have taken. Okay. Now if you will select and then delete, it will appear on white screen. So color is appearing. Okay now. So you can also use the background color. How to use the background color? I am showing you once again. Opening that image. Okay. Taking the brush. You can use the foreground color. Background color. Okay. Some of the applications is having some options. Okay, like if you will use the latest photos or not, then on that environment there is some special options. Okay. Uh, One of the most important thing in the background color is by default white. Okay, now the background color is by default white. Okay. Next. Swatch. This is a panel that is used to select the swatch. What is swatch? Swatch is a type of color plate. Okay, now come everyone. Open the Photoshop. Okay. The image here. Okay. So I am currently my background color I am changing. My background color is like red. Okay. So if I will draw through the brush, then it will go the red color that is foreground color. If I want to change your color, okay, then you can also change by double clicking on foreground panel. Else you can choose click on window and then choose on color. After clicking on it will color box will appear a color swatch. Just as a click on swatch and then you can choose your own color. I am taking like a sky blue. Okay, I have picked my sky blue, then brush will go the sky blue. Okay, now so by using
swatch. It is a type of color picker. You can pick your own color. Okay, next. Yeah. Tool option bar layer panel. Okay, tool option bar and panel. So next is tool option bar and layer. In the next video, I will discuss about the selection. Okay, so tool option bar and layer panel. Okay, so this bar, option bar is located on the top of top and display various of the selected tool. You can change the options to use the tools editing. Okay, टूल ऑप्शन होता है। देखिए कोई भी टूल हम लोग सब चूज कर सकते हैं, सब ऑप्शन होता है। जैसे सपोज ये हमारे पास ये, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एरिया आप दिखा होगा, ठीक है। ये सब जो एरिया ये आपका टूल ऑप्शन है, टूल ऑप्शन इसी को बोलते हैं। अब इसमें इस टूल के जो हम लोग चूज किए हैं, ये ब्रश वाला ऑप्शन, इस ब्रश के लिए यहाँ पर कुछ टूल्स दिया गया है, ठीक है। तो कैसे हम ब्रश चूज किए तो इसका ब्रश को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर आप ब्रश, फिर उसका ब्रश कैसा आता है एक्टिव अगर नॉर्मल डिजॉल्व बिहाइंड ईयर लाइक दैट, तो सब ऑप्शन दिया गया। ऑपेसिटी, ऑपेसिटी मींस कि कलर ये फ्लो करेगा, ठीक है। ऑपेसिटी मतलब इसका कलर विजिबल है, जैसा 100% है तो देखिए इस तरीके से आपका फ्लो किया। वही हम कर देते हैं 10% या फिर 30% तो देखिए इसका आप देख सकते हैं हल्का लाइट कलर हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसकी ऑपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और कलर फ्लो कितना होगा उसके लिए भी आप यहाँ से फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो each and every tools is having on options, tool options. Okay, like I have selected rectangle tool, then it is having a selection, add selection, subtract from selection, and intersect like that. If you will take a magic tool, then it is having also its sub options. If you use drop option, drop tool, then it is having height with resolution, pixel etc. Okay, now so tools options is having the sub options of selected particular tool. Okay, what tool options? Tool options is the type of tab, not type of bar. Yes, exactly. Tool option is the type of bar which contains the sub options of the selected tools. Okay, तो जो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे उसका सब ऑप्शन वहाँ पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सो लेयर होता है क्या, लेयर every image is contains, each and every image contains a layer. Okay, like I am showing to you, I'm opening one more image. Okay, like I'm taking this image. Okay, so if I place this image at the top of this image, then you can see it is having its own layer. Okay, you can see here at the layer section, you can see, just a second here. Okay, so my background layer is layer 0 and one more layer is XYZ. So this layer is here. You can see the effect. If I will move here, then layer will affect, layer will show the effect. If I will place here, then layer will show the effect. So every image having its own layer. Okay, layer is the type of image where we have kept our image. It will take it will reserve the single image, single image area, we can say. Okay, now so every image is having its own layer. Okay, अब एक ही इमेज पे आप जितना लेयर चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, बट आप इसको सेव करेंगे तो सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे लेयर पर भी काम करेंगे, लेयर पर हम लोग समझेंगे कैसे काम होता है जब हम लोग थोड़ा सा एडिटिंग एडिटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो। ओके ना।
सो नॉर्मली आप समझिए लेयर क्या है, यूजर्स कैन अरेंज स्टैक ऑफ लेयर्स मींस यहाँ पर कहने का सेंस है मल्टीपल इमेज को हम लोग एक इमेज में अरेंज करेंगे तब उसको कहा जाता है स्टैक ऑफ लेयर्स, मतलब एक ही इमेज मल्टीपल इमेज को हम लोग काम करेंगे। ठीक है, each image is having its own layer. In each layer an image और illustration can be kept। वही बात हो गया जो हम बोल रहे हैं, each image का अपना अपना एक लेयर होता है, वही है each layer image और illustration can be kept। ओके, इमेज जो होता है ना उसका एक अपना लेयर होता है और एक ही लेयर होता है, मल्टीपल नहीं होता है किसी भी इमेज का। दिस वे a stack of images and illustrations created, layers can be created, deleted, duplicated, arranged and merged layers default is called background। तो कोई भी लेयर जो होता है उसका डिफॉल्ट बैकग्राउंड बैकग्राउंड होता है। जैसे यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, ये इसलिए नहीं शो कर रहा है, जब रियल इमेज पर वर्क करेंगे तब आपको बैकग्राउंड शो करेगा। ठीक है, रियल इमेज आपको जैसे कि हम ओपन करके दिखा देते हैं, लाइक ओपन एंड देन नेक्स्ट I am going to take image like this file so after opening this file you can see it will show as a background। okay, it is showing now it is like as a background। so जैसे जैसे इमेज पर काम करेंगे वहां पर आपको बताएंगे, ठीक है ना, बैकग्राउंड आता है और यहाँ पर लेयर 0 लेयर 1 कैसे आ रहा है वहां पर बताएंगे। ठीक है, बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझिए, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं। डिफॉल्ट लेयर इज बैकग्राउंड, ये आप लोग देख लीजिए। लेयर को मर्ज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। सपोज ये लेयर 0 को डुप्लीकेट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द लेयर एंड देन डुप्लीकेट लेयर। इफ यू क्लिक duplicate layer it will appear layer 0 copy giving my name my layer। हम यहाँ पे माई लेयर के नाम से क्लियर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए माई के नाम से एक लेयर हो गया, मतलब यहाँ पर एक और इमेज आ गया। हम बोलते थे आपको कि ईच लेयर ईच इमेज इज हैविंग इट्स ओन लेयर, हर इमेज का अपना एक लेयर होता है। माई लेयर ये रहा और पहले वाला लेयर 0 जो है वो इस लेयर के पीछे है। ठीक है, और टॉप सबसे टॉप में लेयर 1 है, इसको आप चाहे तो मैनेज भी कर सकते हैं। लेयर 0 को लेयर 1 को हम लोग बीच में कर देते हैं, तो देखिए लेयर 0 सॉरी लेयर 1 बीच में चला गया। तो अपने अकॉर्डिंग लेयर को रख सकते हैं। आप चाहते हैं मर्ज करना तो मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज करने के लिए लेयर को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, सेलेक्ट करके और उसके बाद हम लोग राइट क्लिक करके मर्ज कर देते हैं, बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, लेयर को डिलीट किया जाता है, सपोज जैसे कि माई लेयर डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक ऑन माई लेयर एंड क्लिक ऑन डिलीट, it will say delete anything, yes, so yeah, delete it। okay, in the next video I will discuss about the selection। okay, I will discuss about the selection। so thank you everyone।